और दूसरा मुझे ये बताएं कि बुखार के साथ झटके तो नहीं लगे थे? नहीं लगे। या खानों में से रेशा आता हो? नहीं कुछ नहीं। गला खराब तो नहीं था? नहीं कुछ नहीं। पेशाब में कोई मसला तो नहीं? आप जलन तो नहीं होती थी पेशाब कोई करते हुए मसला रोता हो? नहीं, कोई मसला नहीं। जोड़ों में दर्द तो नहीं था? नहीं कुछ नहीं। आंखों में पिलाहट महसूस होती है? नहीं। कान वगैरह नहीं? नहीं कुछ नहीं। पोटियां उल्टियां तो नहीं लगी हुई थी? ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਨਾ 9 ਤਰੀਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਲੱਗੀ। उल्टियां लगी थी, पोटियां नहीं थी? चलो उल्टियां ਉਲਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ हम्म, ਉਦੋਂ 5 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। 5 दिन पहले लगी थी। तो कितनी अच्छा पहले बुखार के साथ मुझे ये बताएं कि इसको जो है सांस तेज तो नहीं हो रहा था इसका? पर ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। पसलियां चल रही हों? नहीं हैं? कुछ भी नहीं नहीं, था, सिर्फ अच्छा। सर्दी नाल बाहर ही। अच्छा, उल्टियों का बताएं, उल्टियां कितनी कर रहा था ये? ਉਲਟੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ जो चीज़ खाता ਜੋ था। ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। और पूरे दिन में कितनी उल्टियां कर लेता था? पूरा दिन में 10 दफ़ा कार ही लेना सी। 10 पानी की दफ़ा। बहुत कमी हो गई। पानी की भी कमी हो जाती थी? ठीक है। आंखें तो चली जाती थी? हाँ जी, इतने ना हाँ। के पाए। ठीक है। उल्टियों के साथ पेट में दर्द होता था बेटा? हाँ थोड़ा नहीं? थोड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं होता? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ हम्म, ਤੇ चलो ठीक है। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਦੀ ਦਰਦ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ पेट ਬਾਹਰ। फूल तो नहीं रहा था? सूख नहीं जाओ? कुछ नहीं। ठीक है। और उल्टियों के साथ पखाने में खून तो नहीं आ रहा नहीं था? कुछ नहीं। या इसको उल्टी में खून आ रहा हो? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਲਰੀ ਚ। उल्टी चेक वाले खून आया था? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा, उल्टी कितनी मिकदार में कर रहा था? एक कप भर जाता होगा? ਇਸ ਤੋਂ पूरे ਜ਼ਿਆਦਾ दिन में जो उल्टी थी उससे 2 गिलास भर जाते होंगे? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। इसको ज्यादा भर जाते थे? 3 भर जाते होंगे? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ- सुबह के टाइम कोई बड़ी उल्टी तो नहीं करता था? नहीं सो सुबह के? नहीं सुबह नहीं। उल्टी के साथ सर में दर्द तो नहीं था? नहीं सिर ही दर्द सर में दर्द नहीं था। ठीक है। आपने बुखार बताया, उल्टी बताई, और तो कोई मसला नहीं था? नहीं जामुश। ठीक है। उसके बाद फिर आप बच्चे को यहाँ पे ले आए हाँ जी या कहीं और भी चेक कराते रहे? हाँ जी। और प्राइवेट भी कराते रहे, सरकारी भी 2 अस्पतालों से लैके आए। उन्होंने क्या बताया, इसका क्या मसला है? एक थां ते टेस्ट कराया तो उन्हें टाइफाइड बुखार दसिया सी। दूसरी थां ते फिर सरकारी उस तो वड्डे अस्पताल गए सो उन्हें कहा सी भी पेट ही थोड़ा जिहा मसला ते नॉर्मल जिहा बुखार है। बुखार उदों भी बहुत ज़्यादा सी। ठीक है। उसके बाद जो लोकल डॉक्टरों से आपने दवाई लिया उससे इसका बुखार सही हुआ था या नहीं? बस थोड़ी देर ही हुंदा सी। थोड़ी देर होता? 2 पट्टियां घंटा। करते थे हाँ बुखार जी के हाँ जी लिए? पट्टियां। और शरबत वगैरह देते थे? हाँ जी शरबत भी देंगे सन। उससे सही हो जाता था लेकिन दोबारा हो जाता थोड़ी था? देर ही हुंदा सी, घंटा डेढ़ ही ठीक है। हुंदा। अच्छा। उसके बाद आपने लोकल डॉक्टरों को चेक करवाया, उन्होंने इधर भेजा था या खुद आए थे? नहीं खुद ही आया सन। खुद 20 आए दिन थे। भी क्या सी 17-18 दिन तो नहीं आराम तो आया। यहाँ के इमरजेंसी में दाखिल हुए हाँ जी थे? बने। इमरजेंसी में इसका क्या क्या इलाज हुआ? कितनी देर इमरजेंसी में दाखिल रहा? मेरे ख्याल है 2-2.5 घंटे ठहरे होंगे। 2-2.5 घंटे ठहरे थे। इलाज क्या क्या हुआ था? उन्हें एक्सरा कीता सी। छाती था? हाँ जी। और उस तो बाद जेड़ा है ना कोई ड्रिपां लाइया ही ने। ठीक है। और टीके लाए ने। उस तो बाद जेड़ा है ना उन्हें अल्ट्रासाउंड कराया। पेट था या छाती था? छाती था। हाँ अच्छा जी। ठीक फिर है। जेड़ा है ना उन्हें सन दसिया भी नाल दिल का मसला। दिल का पहले नहीं सी मसला? पता। दिल का मसला उन्होंने बताया आपको? पहली दफा पता लगा हाँ जी यहाँ पहले आके? तो। ठीक है। और क्या क्या टेस्ट भेजे थे? और भाई उधर तो ना कुछ भी नहीं सी मेरे। अच्छा, बुखार के साथ इसको ठंड लगती थी? हाँ जी सर्दी बहुत है। और जो है रात को पसीने आते थे? हाँ जी। गिल्टियाँ वगैरह तो नहीं बनती नहीं थी? कुछ भी नहीं। अच्छा, बुखार इस तरह तो नहीं होता था एक हफ्ता हो और फिर दूसरे हफ्ते खत्म हो जाए, इस तरह नहीं? बाहर लगातार ही होता। लगातार रहता था? ठीक है। अच्छा, एक्सरे कितना दिन की पट्टी पट्टी की थी दिन की? नहीं मुझे नहीं पता। ईसीजी की थी? हाँ जी। और कोई टेस्ट आपको याद हो जो बताना नहीं, चाहें? डॉक्टर पेशाब के टेस्ट किए थे? वो इधर आन की थी। अच्छा चलो, फिर आप वार्ड उधर खून लगा था इमरजेंसी में इसको? नहीं इधर आन की फोन लगा। अच्छा ठीक है। इमरजेंसी से आप वार्ड चले गए और अब आपको हो गया वहाँ पे 1 महीना पूरा हो गया। हाँ। अब वहाँ क्या क्या टेस्ट हुए और क्या क्या इलाज हुआ वो बता दें। उधर पेशाब का टेस्ट होया 3 दफा ते ब्लड का बड़ी देर। पेशाब का हुआ है, ब्लड का हुआ है? हाँ जी। ब्लड का कौन सा टेस्ट हुआ है?
कोई 4 छोटी बोतलें और कोई बड़ी बोतल भेजी थी? छोटियां लम्मियां बोतलां भी ਹੁੰਦੀਆਂ हाँ। ਸਨ 3 ਦਫਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ शीशियाँ जो जान रहा है, ठीक है। और दूसरा मुझे ये बताएं कि पेशाब का भेजा है, ब्लड का भेजा है, और दोबारा हुई थी दिल की पट्टी? हाँ जी दोबारा 3 दफा हुई थी। दोबारा 3 दफा 2 हुई। दफा साढ़े को रिपोर्ट हैगी, तीसरी दफा जरा इन्हां ने भी नहीं किया। वो जो दिल का अल्ट्रासाउंड किया था वो दोबारा हुआ था? नहीं, जो आपने मुझे इधर बताया इमरजेंसी में दिल का अल्ट्रासाउंड हुआ हाँ वो जी। दोबारा ऊपर हुआ है? ऊपर भी हुआ से तो नीचे भी आना। नीचे भी हो रहे हैं, 2 बार और हो रहे हैं, ठीक है। चलिए भी ये बताएं कि और क्या क्या इलाज हुआ है, महीने से आप उधर हैं? उस तो बाद जरा ना परसों की गल है, उस दिन 20 सीसी सिरिंज नहीं हैगी, हाँ हाँ, इसके साथ भी ब्लड मिले है भी दिता है। ठीक है, वो 234 नंबर कमरे च डॉक्टर बोल रहे दवाया, ठीक है। वो भी रिपोर्ट नहीं आई। वो भी रिपोर्ट नहीं हुई, ठीक है। और इसके अलावा इस तो अलावा कोई इलाज बिल्कुल कोई ठीक है। बड़ा एक्सरे वगैरह तो नहीं हुआ नहीं दिमाग से? हैं, नहीं वो नहीं हुआ। ठीक है। और इलाज क्या क्या हुआ है? ये तो टेस्ट हो गए ना, इलाज में कोई तब्दीली खून लगाया आपने बताया था? हाँ जी। क्या ब्लड ग्रुप है इसका? मुझे नहीं पता। ब्लड ग्रुप नहीं दसे दोनों? अच्छा, सुर्ख लगा था गुलाबी सफेद? सुर्ख। खून दिया किसने था? साढ़ा 22 22 तक। अच्छा, खून को प्रॉपर उन्होंने चेक करके दिया था? हाँ। उसमें मसला तो नहीं था? नहीं कोई मसला ठीक है। खून लगने के बाद इसमें सोजी तो नहीं हुई थी? नहीं कुछ। ठीक है। उसके बाद और क्या हुआ? ऑक्सीजन तो नहीं लगी? ऑक्सीजन नहीं लगी, बस भाप खांसी की वजह भाप दे रहे हैं, खांसी भी हो गई है? खांसी पहले थी या इतने आके हुई? नहीं इतने आन के खान पीन का मसला लग गया बच्चे। ठीक है बीबी। अच्छा, ये बताएं कि और वार्ड में जो है कोई गोलियां दे रहे हैं? हाँ जी। कौन से रंग की? पहला डेस्प्रिन देंदे रहने। ठीक है। और मेरे ख्याल हफ्ता वो दिता ने, उस तो बाद एक हफ्ता डिस्प्रिन दिया? हाँ जी। उस तो बाद उन्हें बंद करके फिर पीली गोली थी, छोटी सफेद वाली गोली देना। वो किश्ती वाली गोली? छोटी सफेद गोली? हाँ जी। तो जेडी पीली सी उनका 3 हिस्से देंदे थे, चौथा हिस्सा नहीं देंदे। पीली हफ्ता वो चलती रही। उस तो बाद फिर जरा है ना गुलाबी रंग की गोली अद्धी अद्धी 2 टाइम देना। गुलाबी रंग की कोई ऐसी गोली है जिसका जुम्मे को नागा कर रहे हो, बाकी सारे दिन में देते हैं? नहीं नागा कोई नहीं करता। ऐसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये डिस्प्रिन देने से इसके पेट में कोई दर्द शुरू तो नहीं हुआ था? नहीं कुछ नहीं। या कानों में घंटियां बजी? कुछ। और पेट में दर्द कुछ शुरू हुआ हो? पेट च एक बार दर्द हुई एक सी बार ही हो जैसी? ते वो डॉक्टर साहब ने कहा से उन्हें सांसी का दे दिता सी, बच्चा बेहतर हो गया। ठीक है। और दूसरा कोई जो है आंखों में मसला तो नहीं हुआ कोई दवाई देने से? नहीं खांसी तो नहीं हुई? खुश खांसी कोई? नहीं हुआ। ठीक है। और जो है और कोई इलाज इन गोलियों के अलावा कोई शरबत भी दे रहे हैं? हाँ जी। सिर तो पहला पेनाडोल दे रहे थे बाहर वास्ते, उस तो बाद जड़ा है ना फिर देंदे रहने सफेद रंग का होंगे। नाम नहीं याद? नाम नहीं याद, ठीक है। और टीके और डिब्बे भी लग रही हैं? हाँ जी। ये काम तो नहीं हुआ इन गोलियों को देने से? नहीं कोई पेशाब के रंगत में तब्दीली तो नहीं आई? नहीं कुछ नहीं। रंग थोड़ा थोड़ा ना तब्दील होने लग गया, पीला भी होने लग गया, फिर उन्हें ब्लड लगा। पीला होने लग गया? हाँ जी। फिर बेहतर हो गया उन्हें ब्लड लगा। टीके ड्रिप में कोई नाम वगैरह उनका याद हो? डिस्प्रिन के अलावा कोई और नाम आपको याद नहीं है? नहीं। अच्छा, महीने के दौरान से महीना हो गया तो आपने इसकी तबीयत में तो बेहतरी महसूस की? बुखार इसका बेहतर हो गया? हाँ जी। बाहर पहले जरा सी ना 104 पे सी, उस बाद फिर 103 पे आ गया। अब ठीक है, बुखार इसका बेहतर है? यहाँ राती होया 101 पे। रात 101 सी? हाँ जी। अभी मतलब पूरा ठीक नहीं हुआ? हाँ जी पूरा। ठीक है। बुखार के अलावा मुझे ये बताएं कि वो जो उल्टियाँ बता रही थी वो अब बेहतर है? हाँ जी। वो बेहतर है। बाकी जोड़ों में कोई दर्द नहीं है? जिस्म में कोई कहीं और दर्द होता? पेशाब में खून वगैरह तो नहीं आता? सर में दर्द नहीं होता? जिस्म में किसी हिस्से की कमजोरी? ठीक है। यहाँ कोई गिल्टियाँ तो नहीं बनती जिनमें दर्द होता हो? नहीं, ठीक है। अच्छा बीबी, ये बताएं कि जो है ये तो अभी का हो गया, इससे पहले आपका बच्चा बिल्कुल ठीक था या कहीं दाखिल हुआ है? नहीं पहले दाखिल किते भी नहीं सोया ते जिना 3 साल देगा हो गया सी, 3 गल्ला नहीं सी करता। ठीक है।
ਇਹਦੀ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ੁਬਾਨ पे छाले बन जाते ਹਾਂਜੀ थे, ਇਹ ठीक है। ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਹੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚਿਲਡਰਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, 2 ਦਫਾ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਾ ठीक हो गया, गला से गला भी करना शुरू हो गया उसका, बिल्कुल चेक हो गया, ठीक है। तो क्या मसला बताया था उस टाइम, इसको क्या है? तो मुझे नहीं याद। चलो ठीक है, वैसे बच्चा आपको बिल्कुल ठीक हो गया था एक दफा। पैदाइश नॉर्मल हुई थी? नहीं, बड़ा प्रेशर बड़ा ऑपरेशन होया सी, ठीक है। ऑपरेशन की वजह दसी सी? ऑपरेशन की कोई मसला वजह नहीं सी दसी, वो तो कहते सा नॉर्मल हो जाएगा, मैं आपको ऑपरेशन। आपने खुद ऑपरेशन कराया था? उससे पहले कोई बच्चे ऑपरेशन के साथ पैदा हुए? एक बच्चा ऑपरेशन के साथ हुआ सी ते 4 अच्छा, बच्चे। पता है आपको जो है ना हमल के दौरान कोई जिसमें निशान तो नहीं बने थे, या कोई शुगर का मसला तो नहीं? नहीं, शुगर का मसला नहीं थी, तो नीले रंग के ना इतना बच्चा नीले रंग के स्टार होने से, मेनू बांधे सन बच्चे ठीक है। बच्चा पैदाइश के बाद दाखिल तो नहीं करना पड़ा नहीं कितने हैं? कोई मसला और रोया फौरी सी? हाँ जी फौरी। चलो ठीक है। उसके बाद दूसरा मुझे ये बताएं कि आपके पेट में पानी कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ था पैदाइश नहीं, के? मेरे पेट में पानी ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा हो जाता था। ये 5 टीके सारे लगवाए हुए हैं? हाँ जी, इनने बच्चे पीला कार्ड बना हुआ इसका? हाँ जी। एक तो ये टीके लगे हुए और इजाफी टीके भी लगवाए हुए हैं, सालाना टीका भी लगवाते हो? हाँ जी, साल का जेड़ा लाते ने 9 महीने का हाँ हाँ, वो भी लाया था। वो भी लाया सी, ठीक। कार्ड आपका बना हुआ है। इसके अलावा कोई बाद में इजाफी टीके आपने नहीं लगवाए? नहीं, कोई नहीं। ठीक है। खुराक में कोई परहेज तो नहीं बताया हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अभी तक किसी चीज़ से कोई परहेज, पानी से कम पीने के लिए कहा हुआ? अभी नहीं, तक जो खुद खाते हैं उसको वही खिलाते हैं। हाँ। क्या क्या ले लेता है सुबह दोपहर रात में? खाना को नहीं खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, ठीक है। अंडा खा रहे हैं, ये दोनों को। स्कूल जाता है? हाँ जी, कौन सी क्लास में? तीसरी में है। तो ये बताएं कि तीसरी क्लास में ये है, बीमारी की वजह से इसकी छुट्टियां हो रही है? इसको गर्मी की छुट्टियां मिली हुई हैं? नहीं, गर्मी ने ना 1 महीना ते 10 दिन छुट्टियां हुई सन ते ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। अब छुट्टियां हो रही हैं, मतलब बीमारी की वजह से इसमें। हाँ जी। और इसमें कुछ चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा, लड़ता तो नहीं है? लड़ता तो बड़ा। अच्छा ठीक है। और अबू क्या करते हैं इसके? ਇਹਦਾ ਬੁੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾ। घर अपना हाँ जी, कच्चा है पक्का है? हाँ पक्का है? हाँ जी, कितने मरले में? टाइमर 2.5 मरला में। कितने बंदे रहते हैं घर में? 6 6 बंदे रहते हैं। रात को एक कमरे में कितने सोते हैं? 6 एक ही कमरा है? हाँ जी, वॉशरूम कच्चा है पक्का है इसका? वाशरूम पक्का है। हवादार है? हाँ जी, इलाका आपका जो है वो कच्चा है या पक्का है? इलाका कच्चा इलाका कच्चा है, ठीक है। कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ था इसका नहीं, पहले माजी में कभी हुआ? किसी दवाई से कोई एलर्जी? नहीं किसी कभी हकीम की दवाई तो नहीं खिलाई? हकीम दी अब हार दे दौरान एक 2 दफा एक दो दफा हकीम की भी खिलाई है, ठीक है। और उसकी दवाई से बेहतर नहीं हुआ था? नहीं, बेहतर तो किसी दवाई ना रही। नहीं हुआ, ठीक है। आपको इसकी बीमारी के बारे में क्या बताया गया? मैं तो 1-2 दफा डॉक्टर ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि इन्हों ना जरासीम ने बहार है। अच्छा, जरासीम है, ठीक है। और उन्होंने क्या दिल का वाल जड़ा है ना वो सुंगर है। सुंगड़ है? हाँ। लीक तो नहीं दसिया? नहीं, मुझे नहीं। वो नहीं बताया, जरासीम बताया आपको, ठीक है। और टीका उन्हें लाने पैने 2 लग गए ने 21 दिन बाद। ते उन्हें क्या भी 5 साल तक जड़ा ना नागा नहीं करना। अच्छा, वो टीका भी लग गया? हाँ जी, 2 लग गए। 2 लग गए हैं। हाँ जी, कौन सी साइड पे लगाया था पहली दफा? पहली दफा अच्छा, उसको लगाने से पहले उसका कोई टेस्ट किया था? मुझे नहीं याद। तो याद नहीं है? कोई एलर्जी के लिए भाई वो नहीं किया, याद नहीं है आपको? हाँ नहीं, ठीक है। एक पहली दफा एक कूल्हे में लगाया था, दूसरी दो उसी में लगाया, दूसरे कूल्हे में दूसरे लगाया? को दूसरे कूल्हे में लगाया। हाँ। उसको लगाने से इसको चलने में कोई मसला तो नहीं नहीं, कोई हुआ? मसला वहाँ पर रोड़ियाँ तो नहीं बनी? नहीं नहीं। ठीक है। टीके की मिकदार याद है कितनी लगाते हैं? वो याद है आपको नहीं? ठीक है। और क्या बताया? जरासीम बताया, टीका लगवाने का 21 साल तक? 5 साल 5 साल तक। 21 दिन बाद कोई ऑपरेशन का तो नहीं बताया आपको करना नहीं, पड़ेगा? अभी तो नहीं। 5 साल तक। और कितना अर्सा आप उन्होंने आपको यहाँ पे वार्ड में रहने का कहा है?
ये तो ना कुछ मैंने उन्हें क्या सी 42 दिन का कोर्स है, 42 दिन का कोर्स है। इस तो फिर देखेंगे क्या होता है। इसके बाद है ठीक है। फिर कोई हिदायत नहीं थी कि आपने जब जाना है तो क्या क्या करना है? नहीं अभी कोई दांतों के बारे में तो नहीं बताया? नहीं, या अभी फिर आपने जो ऑपरेशन करवाना है तो कोई हिदायत? नहीं उन्हें क्या सी जब ऑपरेशन कराओ पहला चेक करा के टेस्ट करा के फिर इनका प्लान दूँ कराना ये सारा। ठीक है, ये बताया आपको। और कोई हिदायत दी हुई है? नहीं ऐसा मुझे समझ नहीं आने। समझ नहीं आती आपको? ठीक है। तो वो 42 दिन का जो कोर्स है उसमें से आप कितने दिन का हो गया? याद है मैं तो उधर अच्छा, शादी आपकी खानदान में हुई हुई है या बाहर? बाहर कितने बच्चे और हैं? मेरे को 3 बच्चे 3 बच्चे हैं। कोई बच्चा दाई या फौत तो नहीं हुआ? और मेरे 4 हुए। 4 फौत हुए। चलो बेटा ये जूता उतार दो, आपको चेक कर लें। उम्र इसकी 10 साल है। हाँ जी मैम आई नीड स्क्रीन, चाइल्ड इज 10 years old। स्क्रीन चलो इसकी शॉर्ट उतार दें, कमाना कर लें। हाँ इसकी शॉर्ट ऊपर को। इधर से राउंड से उतारे बेटा। चलो बेटा आ जाओ। अपने काम ये सारे कर लेता है, वॉशरूम चला जाता है, खाना खा लेता है, कपड़े बदल लेता है? पहले 10 दिन नहीं चलो सी बेटा, जा रहा चल है के हम ठीक है हम जा रहे हैं। वो नहीं जा रहे हैं? हाँ जी हम जा रहे हैं पहले नहीं सी पहले नहीं जा रहे हैं। ऐसे अब कर रहे हैं, ब्रश भी कर रहे हैं, हाँ जी बस वॉशरूम भी जा रहे हैं। हाँ जी सब चलो बेटा इधर आ जाओ। ठीक है, आपका हाथ देख रहे, पाँव मिला लो। हाँ शाबाश, वेरी गुड। स्कूल जाते हो बेटा? कौन सी क्लास में हैं? 3 में हो? ठीक है, आ जाओ। उम्र 10 साल है इसकी। हाँ जी सर मैम आई वांट टू नो वेट ऑफ द चाइल्ड। चलो बेटा आज इधर लेट जाओ, आपको मना कर लें। अच्छा, जो आपके 4 बच्चे फौत हुए थे हाँ जी वो कब कब हुए और कैसे कैसे हुए? लेट जाओ। और किस उम्र में हुए? वो 7 माह का एक 8 माह का। एक 7 माह का था और एक 8 माह का था। हमल के दौरान हुए थे या बाद में हुए थे बहुत बच्चे? हमल के दौरान हुए थे 4 बच्चे को। हाँ जी बच्चियां जेह्ड़ियां सन 3 बाद फौत होईयां, जेह्ड़े बच्चे ने 8 साल दे बाद। इधर देखो सर, मैम आई वांट टू कंफर्म इन डायलेक्ट। ऊपर देखो, मुंह खोलो, आ करो, आ
पेट में दर्द होता है इसको? नहीं अभी नहीं। बेटा छाती में कहीं दर्द तो नहीं आपको हैं? दर्द हो तो मुझे बताना, ठीक है? ये निशान किस चीज का? क्या हो गया? धक्कर मत बदलो बेटा, आराम से गिर ना जाना। चलो उठ के बैठो, सांस लेनी है, फिर बाहर निकालनी है, ठीक है? और फिर रोक लेना, सांस लो, बाहर निकालो, रोक लो और आगे बढ़ो थोड़ा। चलो ठीक है, अब ले लो दोबारा सांस, ठीक है? अब सांस अंदर लो और रोक लो। पीछे कहीं दर्द तो नहीं होती? चलो अब लेट जाओ। चलो ये टांग निकाल लो, दर्द तो मुझे बताना। सांस लो, सांस लो, 1 2 3 कहो, 1 2 3। जोड़ों में दर्द तो नहीं था इसको? मैम आई वांट टू सी जेनिटल फॉर एसएमआर। चलो इसी, चलो बेटा पीछे करवट बदलो साइड में। ये ला छोड़ो पर उठाओ, ये वाली भी। खानदान में ये मसला किसी और को है? नहीं। अच्छा, जो आपके बच्चे फौत हुए हैं उनकी वजह भी बताइए उन्होंने। अब आपके कितने बच्चे और हैं? 2। उनकी क्या क्या उम्र है? एक 18 साल का, एक 12 साल की बच्ची है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको पहना दें। Ma'am, I want to do the fundoscopy for us. बेटा 1 मिनट ठहरो।
बैठ ब्लड प्रेशर चेक करना। ये आप इधर आ जाइए, इसको पकड़ लिया। तुम निकल के जाओ। चलो ठीक है, इसको शर्ट पहना। हतमी इलाज भी बताया आपको इसी बीमारी का? हतमी इलाज नहीं, ये भी बैठे इधर अभी जाओ। So my patient Kamran, 10 years of age, resident of Nankana, admitted 1 month back. Ma'am, my patient Kamran, 10 years of age, resident of Nankana, admitted 1 month back with presenting complaints of fever for 18 days and vomiting for 5 days. Ma'am, my patient was in his usual state of health 1 month back when he developed fever, which was sudden in onset, documented to be 104 degree Fahrenheit, and not associated with any specific timings, and but it was associated with chills, but there is no history of night sweats.
air discharge, urinary complaints, joint pain, loose motion, respiratory distress, or any air discharge or lymphadenopathy. Uh, Fever was associated with vomiting, which was present for 5 days. It was present after every feed 10 times a day and associated with dehydration, abdominal pain, but there is no history of abdominal distension associated with it, hematemesis, melena, morning type episode, and or fits. With these complaints, they went to some local practitioners. Here he was treated with oral medications. His fever settled, but then occurred again, and he was brought to some tertiary care setup where he remained admitted in emergency and then brought to the ward. And where during this course of 1 month of treatment, he is being investigated extensively in the form of CBC, urine test, ECG, chest X-ray, echocardiography, and 5 blood samples have also been sent, and and he is being managed with oral medications as well as the parenteral medications. The name of the drug attendants don't know, but there is no history of any jaundice, any there is history of discoloration of urine after taking the oral medication, but there is no history of abdominal pain or tinnitus or according to the mother, patient has fever has not settled yet. It was documented to be 1 degree Fahrenheit even at night, and but his vomiting has settled. Here, past history is, madam, unremarkable and unremarkable. Birth history was delivered by cesarean section, but no complication was observed at that time. He is vaccinated according to the EPI, and he nutritionally he is on routine diet, and he is a student of class 3, and disease has a significant impact on him. He has there are absentees occurring now. Belongs to a poor socio-economic status, owns 2.5 marla home with 1 room and 6 members sleep in 1 room. Washroom is pakka and is well ventilated, and the area is kacha according to mother. Mother has a fair knowledge about the disease, and she has been told some sort of vegetation on milk, and she told me that patient is on has been given twice intramuscular injections on alternate hips, and no difficulty in walking or any complication in the form of hypertrophy or dystrophy have been observed on the hips, and he has been advised a total course of 42 days, and have also been counseled about proper oral care or proper care of oral hygiene as well as dental care. He is a product of non-consanguineous marriage, and there are two other siblings are alive and healthy, and there is no history of similar disease in the family, but there is a history of death of 4 in pregnancy. Ma'am, on examination, my patient has is quite conscious, cooperative during examination without any voice dysmorphism, and pink in room air. He has a height of 128 centimeter at the age of 10 years, which is at the 10th centile, and weight is 20 kg, which is below 3rd centile. He has a pulse rate of 98 per minute with normal volume, regular character, with no radial or radiofemoral delay, and respiratory rate of 26 per minute, temperature of 98.6 degree Fahrenheit, and BP of 90/60. On examination of the chest, ma'am, there is a precordial bulge,
but no prominent vein scar mark, visible pulsation, or any other chest deformity seen. And his apex beat is in the fourth intercostal space, just lateral to mid-clavicular line, and his first heart sound is soft, second heart sound is normal, and there is a pan-systolic murmur heard at left apical area radiating to the axilla, and murmur is grade 3/6. Ma'am, on further extension of my examination, there are no oscular nodes or Janvelians, and no visceromegaly in the abdomen, and no edema. There is no pallor, cyanosis, jaundice, edema. Lymph nodes, thyroid is not enlarged. There is no clubbing. Back examination is normal. SMR is prepubertal, and there are no PTK bruises present, and joint examination is normal, and respiratory cardiovascular examination is also unremarkable. Oh, sorry, ma'am. CNS and respiratory examination is unremarkable. So, ma'am, I want to do fundoscopy. What's your diagnosis? Ma'am, he is a case of rheumatic heart disease with infective endocarditis. हिस्ट्री आपने डिटेल से ली, लेकिन यू फॉरगॉट टू आस्क अबाउट एनी रैश, नोड्यूल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशन, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट। हार्ट डिजीज की हिस्ट्री में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज़ें आपने मिस की हैं, बाकी हिस्ट्री आपकी थी। हाँ, समझी सुना दी। 10-year-old Kamran, resident of Nankana, admitted 1 month back with presenting complaints of fever for 18 days and vomiting for 5 days, being investigated in the form of blood tests, urine tests, and is managed with parenteral as well as oral medications, and but no side effects of drug apart from discoloration of urine has been observed, and past history is insignificant, and on examination my patient has weight below 3rd centile and height at 10th centile, and head circumference of 51 centimeter, and pulse rate is 98 per minute with no radial radiofemoral delay, temperature of 98.6 degree Fahrenheit, and BP of 90/60. On precordial examination, there is a bulge on the chest, and with no radio, with pansystolic murmur heard at the left apical area radiating to axilla. First heart sound is soft and second heart sound is normal. Rest of examination is unremarkable. I'm sorry, but even after summarizing, still we are unable to conclude to your diagnosis. Can you please better summarize? In 3 or 4 lines, these salient features in history and examination, what you make, those make you conclude is this case as a rheumatic with endocarditis. Ma'am, 10-year-old Kamran, resident of Nankana, admitted with... I don't need the residence in the summary, but I need the diagnosis in 3-4 lines. Make it more short. Ma'am, 10-year-old Kamran presented with history of fever for 18 days associated with chills, and vomiting for 5 days, and being investigated in the form of CBC, blood tests, urine tests, and put on oral and parenteral medication, and her vomiting has now settled, but fever still persists, and past history is unremarkable, and belongs to a poor socio-economic status, and Doctor, you're not understanding her question actually.
देखिए जब आपसे you have given a detailed account of your history already, you have given a detailed account of your examination already. What Dr. Amina is asking you is to summarize your case. When we are asked, when you are asked about summary, that's actually the sort of a conclusion, not the going into the details. So the fundamental points in your history, which you think are important to summarize and conclude your diagnosis, and similarly, only very important positive findings in your examination would form your summary. So try that again. Sir, 10-year-old Kamran presented with a history of fever for 18 days associated with chills, associated with chills and vomiting for 5 days, and taken oral and parenteral medications. And Is that relevant that he's taking oral and parenteral medication in your summary actually? I think आपने थोड़ा रिहर्स नहीं किया कि समरी एक्चुअली होती क्या है और किस तरीके से आप समराइज करते हैं चीज़ों को. समरी मीन्स आपका फाइनल डायग्नोसिस वाज rheumatic heart disease with endocarditis. That's what you concluded. So if you're saying it's rheumatic heart disease with endocarditis, then there are certain fundamental points which actually make you to say that this is rheumatic heart disease. Now, if you have a history of fever for 18 days, does that make it a rheumatic heart disease? Sir, fever is associated with chills. That points towards the possible diagnosis of endocarditis. If you say there's a history of almost 3 weeks fever, that will point towards endocarditis. What makes us think that this is rheumatic heart disease? Sir, patient has failure to thrive. His weight is 20 kg at 10 years. He has displaced apex beat. And you said that the apex beat is in 4th intercostal space, just lateral to the mid-clavicular line. Now that's not really displaced. That's almost normal for a 10-year-old child. I didn't listen to your history. I did see you partly examining the patient, but there are certain fundamental things, and I think let me take you through the history and examination so that you are able to conclude it. Now, what are the अभी डॉक्टर उस्मा ने कहा आपसे कि आपने abnormal movements का जिक्र नहीं किया. If you have a patient with rheumatic heart disease or acute rheumatic fever, अभी तो आपने ये decision नहीं किया कि ये acute rheumatic fever है या rheumatic heart disease है. It was not evident from your history. So then you have to see what are the major criteria for acute rheumatic fever and whether you have covered all of them adequately. Did you? She said you didn't mention about abnormal movements. Don't you think that's a major criteria in rheumatic fever and rheumatic heart disease and has to be elicited both in history and examination? Okay, so that's one thing which you must make sure कि आप history में पूछेंगे भी माँ से abnormal movements का और फिर अपने examination में भी make sure करेंगे कि that you mention that in your logical examination is normal, particularly there are no abnormal movements. Did you assess his functional class? Yes, sir. He can. He belongs to a class. बिलोंगिंग नहीं होती क्लास तो आप असेसमेंट करते हैं ना. हाँ, सोशल क्लास की बात नहीं की आपने, हमने फंक्शनल क्लास की बात की है ना. तो बिलोंगिंग तो सोशल क्लास की होती है ना. तो जो फंक्शनल क्लास की तो एक असेसमेंट होगी ना कि whether he is able to walk, does he get short of breath on walking, is he able to go upstairs, और रात को सीधा लेट जाता है या उठ के बैठ जाता है क्योंकि उसको सांस चढ़ जाता है. तो what sort of functional class he is. Any patient with an underlying cardiac lesion, whether it's rheumatic or congenital, needs to be assessed for functional class. And that has to be elicited both in history and your examination. So this is something, that's how you were going to make sure कि ये acute rheumatic fever है, rheumatic heart disease है, कितनी duration है history की. तो ये 18 days तो आगे history में. What about the previous history? Did he have any history of rheumatic fever in the past which made you think that this is rheumatic heart disease? No, so how did you make a diagnosis of rheumatic heart disease? Sir, rheumatic heart disease in new or old case. I'm not asking the definition. I'm saying how did you make a diagnosis of rheumatic heart disease in this child? You said your conclusion is rheumatic heart disease with endocarditis. Sir, failure to thrive, chest deformity, and But did you actually go through the history, asking mother कि उसकी past में कोई
जॉइंट पेन्स की, जॉइंट स्वेलिंग्स की हिस्ट्री थी, कोई हॉस्पिटल एडमिशन की हिस्ट्री थी, कोई प्रोलॉन्ग फीवर की हिस्ट्री थी. Now if you didn't get all that, then I think in a patient like this, जिसमें आप कह रहे हैं कि आपका एक grade 3/6 का pan-systolic murmur है, with apex being in the 4th intercostal space, how did you make a diagnosis of rheumatic heart disease? It's acute rheumatic fever. That would be your, if I was you, I would think it as an acute case rather than a chronic case, because to make a diagnosis of rheumatic heart disease, you need to have an established cardiac lesion, whether that's done in history or examination, या बाकी चीज़ें आपको support करें. Established rheumatic heart disease होगी ना अगर आप rheumatic heart disease के लिए होते. Okay. So what else did you make? आपने subcutaneous nodules के लिए देखा? Sir, I checked for subcutaneous. But you didn't mention that in your जब आप describe कर रहे थे, तो there are again fundamental points जो आप एक patient जिसको आप acute rheumatic fever या rheumatic carditis या rheumatic heart disease के context में देख रहे हैं, तो आपने joints की बात ज़रूर की, that's fine. I think आपने fever की बात की. Specifically looking for subcutaneous nodules is crucial, because that would actually establish कि acute carditis है या नहीं है. और हमारे setup में तो literature says up to 50% of the patients might have subcutaneous nodules. So that's something which is extremely important. और क्या चीज़ आपकी history में important थी या relevant थी? Sir, I checked for erythema marginata. How often do you see erythema marginata? In an acute stage, yes, you can see it, but rash को आपने mention किया, which is fair. Okay. So, अब आप, do you want to sort of conclude it again? So 10-year-old Kamran presented with complaints of fever for 18 days and vomiting for 5 days. You can even say has presented with an acute history. Total duration is only 18 days. Fever for 18 days and then vomiting for 5 days. Okay. Next. Is a known case of some cardiac problem. He is not a known case. You said in history he is not a known case. Huh? So you can't change your history now. तो अगर तो माँ ने आपको categorically कहा था कि ये known case है, did the mother know that the child had a cardiac lesion in the past? Yes, sir. She currently told me that he has vegetation. No, well, she's not a medical person to tell you about vegetation. This is something वो आपने इसने आपको बता दिया, which helped you in diagnosis, fine. इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं कि माँ ने आपको vegetation बता दिया and you know that it is endocarditis. लेकिन whether the mother इस admission से पहले in 18 days से पहले तो उसको नहीं पता था ना कि ये cardiac lesion है. So you really can't say it's rheumatic heart disease. ठीक है. और कोई past history तो है नहीं. तो आप that's how you will summarize your patient. Sir, 10-year-old Kamran presented with acute history of fever and. बेटा ये difficulty आपको क्यों हो रही है? Ward round की वजह से. If you develop a habit of presenting your cases in a concise way on your ward round to your consultant, you will not have that difficulty. आप उसको light लेते हैं ना. This is extremely important as how you present on a ward round. The whole idea is to prepare you for exam as well. No? So 10-year-old Kamran presented with acute history of fever and vomiting. Is on injection of benzethine prophylaxis. Why is your mind fixed on injection and oral medication? That's not important in history in this particular patient. लेकिन ये तो एडमिशन के बाद स्टार्ट हुआ है ना. यू कैन से उस माँ ने आपको वेजिटेशन बता दिया, ऑफ कोर्स ही विल बी ऑन आईवी एंटीबायोटिक्स ना, बिकॉज यू आर सेइंग इज यू आर मेकिंग ए डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. तो बेटा जब आप कहते हो कि ये एक्यूट रोमैटिक फीवर है और साथ इसको एंडोकार्डाइटिस है, अंडरलाइन लेशन आपके ख्याल में रोमैटिक है, ऑल्दो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, और आपकी जो हिस्ट्री और आपको माँ ने बता दिया कि एक्यूट ऊपर वेजिटेशन से यू नो इट्स एंडोकार्डाइटिस और वो आईवी एंटीबायोटिक्स के ऊपर है बिकॉज ऑफ दैट, देन समराइजिंग बिकम्स वेरी इजी. Sir, 10-year-old Kamran presenting with complaints of with acute history of fever and
and vomiting belongs to a poor socio-economic status. हिस्ट्री में और आपके ख्याल में 2-3 चीजें जो आपने एक्सक्लूड करनी है, यू शुड से इज देयर एनी जॉइंट पेन, No. is there any joint swelling, No. are there any abnormal movements, No. is there a rash on the body? No. So that's what you should say that he has come in with an acute history of fever which is only of 18 days followed by 5 days history of vomiting. There is no history of joint pains or joint swelling, no abnormal movements, no rash. और क्या होता है इसमें एंडोकार्डाइटिस और acute rheumatic fever में? So फीवर तो वो तो आपने बता दिया ना कि फीवर है. व्हाट अबाउट ही कम्स फ्रॉम ए पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जहाँ पे इसकी लिविंग कंडीशन या सोशल स्टेटस आप बता सकते हैं. एग्जामिनेशन पे रेलेवेंट बात क्या है? sir, he is a failure to type child and with precordial bulge and You said he is still febrile. Okay, what is the pulse rate? the pulse is 98 per minute. ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि किसी भी बच्चे में आपके अगर एक फीवर के साथ बच्चा आता है, अभी तो उसकी माँ ने आपको वेजिटेशन बता दी तो आपका माइंड उसकी तरफ चला गया. अदरवाइज तो आप यू हैव टू डिफरेंशिएट ना कि ये बच्चा फीवर के साथ आया है, तो व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन योर माइंड? वन ऑफ देम विल बी एक्यूट रूमेटिक फीवर, ऑफ कोर्स अदर विल बी एंडोकार्डाइटिस, कोई इंटरकरेंट इन्फेक्शन भी हो सकती है. तो पल्स आप बताएंगे, ब्लड प्रेशर बताएंगे. ओके, so blood pressure is 90/60. Blood pressure is 90/60 and temperature is 98.6 degree Fahrenheit and respiratory rate is 26 per minute. So he's not tachypneic. Okay. And what other positive finding? Sir, on cardiac examination. बेटा ये पीछे जो भी बोल रहे हैं अगर आप चुप कर दें तो आपकी मेहरबानी है बेटा. If you want to talk, you should go outside this room. That's not fair at all. You're disturbing everybody. Sir, on precordial examination, there is a chest bulge with first are some soft, second are some normal, and pansystolic murmur are at apical area, which is radiating to the axilla. And there are no subcutaneous nodules, erythema marginatum. Although you didn't look for them, but there's no Normal. subcutaneous nodules, no erythema marginatum. And what about liver and spleen? But they are not visible. ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट ना. हेपेटोमेगली है, यानी मुझे तो वैसे बेशक वो बैठा हुआ था मुझे लगी हेपेटोमेगली, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं है तो दैट्स फाइन. देयर इज नो स्प्लीन ईदर. No, sir. ओके, सो व्हाट इज योर कंक्लूजन देन? Sir, he is most likely a case of rheumatic fever is with infective endocarditis. Okay, what is the underlying cardiac lesion here? Sir, mitral regurgitation. Okay, so if I was you, I would say that this is a patient with signs and symptoms consistent with the diagnosis of mitral regurgitation, क्योंकि आपकी acute है ना, most likely rheumatic in etiology and has now presented with infective endocarditis. And you can't tell it from history and examination whether this is an acute rheumatic fever or rheumatic heart disease, because that would require further investigation. Is that clear? I think your diagnosis should be mitral regurgitation with infective endocarditis. It should not be rheumatic, even acute rheumatic fever or rheumatic heart disease. Because no point in your history and examination is consistent with rheumatic fever or rheumatic heart disease. So just on the basis of your history and examination, you should say that it is mitral regurg with infective endocarditis. And then the examiner may ask you what would the likely reason for mitral regurg. What is the likely pathology of this child? उसमें आपने फिर कहना है कि whether it is acute rheumatic fever or it is rheumatic. How will we then justify chest deformity and failure to thrive? अगर किसी बच्चे को congenital MR है, तो बहुत trivial सा है, चल रहा है, चलता है, आ रहा है, बेटा आप लेटो. can they present like this? Failure to thrive की तो डॉक्टर साहब बेशुमार reasons हो सकते हैं. That cannot be the only reason that you would label a patient as rheumatic heart disease. और जैसे डॉक्टर प्रोफेसर यासीन कह रहे हैं कि the best way to present this case would have been to say it's mitral regurgitation. Then we would ask you what could be the etiology of this mitral regurgitation. Then you would say most likely it is rheumatic because that's the commonest cause of mitral regurgitation. If you look at 100 patients with mitral regurgitation, 90 out of 100 will be rheumatic. Only 10% will be either congenital or connective tissue disease. या post endocarditis और etiology होती है mitral regurgitation. That's far less common. Because he is 10-year-old, then you can say that most likely it is acquired and it could be rheumatic in origin. If I say that it was not a patient with
endocarditis. This is an acute rheumatic fever, and the child has come in with 18 days history. How would you manage this child? Acute rheumatic fever, 18 days fever, आपके सब पास admit हो गया. How would you manage? What are the fundamental steps of management of acute rheumatic fever? Sir, I will do his supportive care as well as specific care. First of all, I will confirm my diagnosis, counsel the attendance of disease, course, complication of disease, treatment, prognosis. अच्छी Then I confirmation will आपने करनी है. आपको question, what is the question? Question is how will you manage a child with acute rheumatic fever? तो confirm case है ना? उसमें उसकी management के steps और management बता दीजिए. Sir, I will opt multidisciplinary approach, recruit myself as a pediatrician, pediatric cardiologist, social worker and nurse and चलिए आप माइक्रो पीडियाट्रिशियन मुझे बता दें कि what to do. sir, I will do monitoring of it. बेटा क्या monitoring करेंगे? What sort of monitoring would you do? Sir, I will involve the whole team. चलिए वो टीम तो आपको इन्वॉल्व कर लीजिएगा जरूर. दैट्स इम्पोर्टेंट. यू आर द टीम लीडर, यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप. ठीक है. If you are a pediatrician or a pediatric cardiologist, so whatever consultant you are the captain of the ship. You have to give instructions to the team. तो आप क्या instructions देंगे पेरेंट्स को, टीम को, वार्ड स्टाफ को और फिर बच्चे को? पहले ये बताओ दाखिल करोगे या नहीं करोगे? Sir, I will. Okay, so that's the first step of your management. In any patient with acute rheumatic fever, they need to be hospitalized because bed rest is one of the fundamentals of management of acute rheumatic fever. ये तो टीम की जरूरत नहीं है ना, दाखिले तो आपके कहने पे होना है. ठीक है. So you admit the patient. Hospitalization is the first thing. What next? Sir, I will admit the patient, maintain vitals, IOP charting, and then I will start him with then I will give him a bed rest of 4 to 6 weeks, and will start him with. But you don't have to keep them in the hospital for 4 to 6 weeks, ना. Bed rest initial आप देंगे ना जब आपने दाखिल कर लिया बच्चे को. How long does it take for acute rheumatic fever to settle down initially? 21 days. But it's 1 to 2 weeks only. It doesn't take more than that. It's very rare for these children to have a prolonged illness when it comes to acute rheumatic fever. So your normal hospitalization is not more than 1 week in general. Yes, you may need it up to 2 weeks because आप PSR, CRP को monitor कर रहे होते हैं. So what will be the steps of management other than hospitalization, bed rest? Specific management बता दो ना. Sir, I will give him anti-inflammatory, antibiotics. Why would you give antibiotics and which antibiotics? What is specific to acute rheumatic fever? Sir, injection benzathine penicillin. Okay. And why do you want to give injection benzathine penicillin? To prevent the recurrence of rheumatic fever. तो फिर आप discharge पे देंगे ना. Why are you giving it on admission? What is the current WHO recommendation or recommendation of Australia, New Zealand guidelines or recommendation of Asia Pacific region? क्या recommendations है इस पर? But the drug of choice is oral penicillin. If you don't have oral penicillin available, you give it for 10 days to eradicate strep from throat. If you don't have access to oral penicillin, then you can give a single shot of benzathine penicillin, which works 2 ways. One, obviously आप उसकी sensitivity भी check कर लेते हैं, make sure the patient is not allergic to it, hospital setting में, and it also eradicates strep from your throat, और फिर वो then it becomes a prophylaxis in long term. ठीक है. And what else? पहला जो इंजेक्शन है उसकी जो रीजन है दैट इज एरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. जो फर्स्ट स्टेप है उसको आपने एरेडिकेट करना है, वेदर इट इज देयर और इट इज नॉट देयर. ठीक है, उसको हमने एरेडिकेशन जरूर करना है. उसके लिए आप पहले ट्रीटमेंट. And what anti-inflammatory choice do you have and in what dose? Sir, Disprin with a dose of 50 milligram for 6 weeks. But who told you 6 weeks and 50 milligram? It is mentioned in that. Okay, but that's you don't necessarily need to give it for 6 weeks. पहले ये बात है. You monitor your acute phase reactants, and most children wouldn't need it for more than 2 weeks. Yes, rarely you can give it up to 6 months. You will have patients extremely rarely who would need it for much longer time.
and 6 weeks is one of those time periods. But generally, it's only a couple of weeks that you need to give Disprin. And the dose, you can start with 50, but most children would need it 80 to 100 milligram per kilogram. Is there any other choice? If the patient is allergic to Disprin, after Disprin दिया वो vomit कर We रहा will है. move to then prednisolone. No. You have other choices as well. If the patient is not tolerating Disprin, what else? इंटेंसिटी है कौन सी I will move to steroids. But there are specific indications for steroids, and we will come to that in a minute. But what other choice do you have? Anybody? Any naproxen. It's now well established that you can actually give naproxen. It's easier, it's better tolerated, it's slightly expensive as compared to Disprin. और बाद दफ़ा availability का मसला ज़रूर होता है, वरना otherwise naproxen is a very good choice if the patient is not tolerating Disprin. Some people would just go to naproxen and don't give Disprin because Disprin has its own problems. आपकी GI problems है, vomiting का मसला है, Ray's syndrome की association है, and so on. Some people would go straight to naproxen. What are the indications of steroids? Sir, carditis with CF and So what is the difference between carditis and CCF? Sir, आपने दोनों को अलग-अलग describe किया. WHO definition of carditis is it involves resting tachycardia, changing murmur, and pericarditis. And CCF is CCF is CCF is CCF. present with The reason I'm asking you is because carditis with heart failure is absolutely an indication for steroids. लेकिन जो carditis per se without heart failure है उसकी controversy है. Some people would give it, some people won't give it, because most patients would actually respond to Disprin as well. But if it is a carditis with heart failure or carditis with a conduction abnormality, जैसे इनमें first degree heart block, second degree heart block, even complete heart block हो जाता है, so that is an absolute indication for steroids. What are the other indications of steroids? sir, allergic to aspirin. Allergic के लिए होता है, tolerate नहीं करते ना बच्चे. Intolerance to Disprin, कि they keep on vomiting, they are not tolerating a big dose of Disprin, तो आप उसको दे दें. Washroom जाना चल ले दो. What else? Sir, vaccination of the child. And No, beta. We have not finished the indications of steroids. I think Pericardial effusion. If you have pericardial effusion, even if they are not in heart failure, you give them steroids within 48 to 72 hours, the effusion disappears. So this is again another important indication for giving steroids. So carditis with heart failure, carditis with pericardial effusion, intolerance to Disprin, और carditis with some arrhythmia, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर आपको second या third degree, first degree heart block is invariable in carditis, but second and third degree heart block is something which you would always observe and is an indication for steroids. और acute rheumatic fever की treatment में क्या होगा? If the child has come in with acute carditis and heart failure, how would you manage that? So I will start him with steroids with a dose of 2 milligram for 3 weeks, then 1 milligram for another 3 weeks, and then for every 3 days I will taper with a dose of 5 milligram. While before tapering, I will start him with. But you can't give such an absolute number to the duration of treatment of steroids. Normally we would give it for a couple of weeks at the most and then start tapering them, and wouldn't give them long term, because if they are in heart failure, you don't want to give them steroids long term. So इसलिए I think duration को भी आप indication ज़रूर बता दें. What else would you do in heart failure? 2 weeks के बाद you Start tapering. start tapering. Start tapering. जो आपके length में जो So Nelson, 3 weeks, 2 milligram, 3 weeks, then 3 weeks, 1 milligram, and then we taper after every 3 days, 5 milligram. But before tapering, we add Disprin with a dose of 75 milligram. So you will add Disprin after 1 month, 4 weeks के बाद add करेंगे. So 6 weeks के बाद.
But we need to look at that, who has written that chapter and what is the reference for this particular, okay. The current guidelines for WHO, Australian guidelines, New Zealand guidelines and Asia Pacific guidelines. 2 weeks, then you start the spree with it and then you taper it down. Ask the visa 2 weeks steroids for 2 weeks and then you start tapering and You add the spree to it because you don't want to give them steroids actually long term. What else would you give in heart failure? Do it every day. You manage heart failure every day. Sir, I will give him diuretics as well as afterload reducing things. Okay. Anything else? And then Afterload reduction में क्या drug of choice होगी? sir, ACE inhibitor Okay. Anything else? and dopamine sir. वो तो आप फेलियर का जब एक्यूट फेलियर में डोपामीन या मिलरिनोन कंसिडर करेंगे ना, लेकिन एक्यूट ऑन क्रॉनिक जो यूजुअल होता है इनमें, उसमें एनीथिंग एल्स व्हिच इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली? हाँ, यू कैन गिव डाइजॉक्सिन इफ यू आर इन एक्यूट हार्ट फेलियर एंड एक्यूट ऑन क्रॉनिक में व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग? Better remember beta blockers, carvedilol. These children tend to be tachycardic because if you have carditis, one of the cardinal signs of carditis is tachycardia. And unless you control their tachycardia, they don't come out of heart failure. So it's better to start carvedilol earlier than later. So in addition to diuretics and afterload reduction, this is one of the most important drugs because it will control your heart rate and they tend to come out of failure far more quickly if you put them on beta blockers. Not Indralol, but carvedilol. Okay. And of course, acute heart failure में तो जो otherwise restriction है, आपकी fluid restriction है, salt restriction है, आप IV diuretics देंगे, dopamine दे सकते हैं, dopamine देते हैं या milrinone add कर सकते हैं if that is what is required. Okay. I think you need to still work hard on your, particularly on your summary. That was really, you were not understanding how the summary is done. You didn't take into account, अगर आपको पता है कि ये रोमैटिक फीवर या रोमैटिक हार्ट डिजीज आप सोच रहे हैं तो देन जो उसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं उन सबको हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है. अगर हम एंडोकार्डाइटिस की तरफ आए नहीं क्योंकि देयर वाज नॉट इनफ टाइम, लेकिन दैट्स अगेन समथिंग जिसके एस्पेक्ट्स को आपने इनकॉर्पोरेट करना इनटू योर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड देन इन योर समरी एज वेल. एग्जाम में आई वुड लाइक टू से दैट एग्जाम देखिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है. दिस टाइप ऑफ हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे इन्होंने प्रेजेंट किया है, आई थिंक देयर वाज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एट द एंड आपको समरी का 2-3 दफ़ा कहा, इवन देन आई थिंक यू आर नॉट एबल टू गिव एन अप्रोप्रिएट समरी वी शुड बी गिवन. क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके. नंबर 2, जब आप समटाइम्स टाइम इतना शॉर्ट होता है कि एंड पे जब मैनेजमेंट का आता है ना टाइम, ओनली 2-3 मिनट्स आता है. जैसे सारे आपसे हाउ डू यू मैनेज दिस चार्ज, यू कैन जस्ट से दैट इरेडिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जिसके आप एंटीबायोटिक एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, उसकी डिटेल वहाँ पे डिस्कशन बाद का टाइम होता है. समटाइम्स देयर इज नो टाइम कि आप उसके स्टीरॉइड डिस्ट्रीन और सारी चीज़ें कर सकते हैं. Number 3 was management of cardiac failure if the patient is in failure. ठीक है, उसको आपने. एंड नंबर 4 इज प्रोफाइलेक्सिस. तो ये 4 स्टेप्स है जो आपने मैनेजमेंट में बताया. उसके बाद उसकी डिस्कशन, उसकी डिटेल अगर टाइम है तो डिस्कस होती है, अदरवाइज द एग्जामिनर विल कम टू नो दैट यू नो हाउ टू मैनेज दिस चार्ज. एटलीस्ट आप उसके स्टेप्स तो बता दें ना. अगर 1-2 मिनट के रहते हैं एंड पे आपको पता है कि जब टाइम बिल्कुल लास्ट पे होती है मैनेजमेंट जब डिस्कस होती है, आई थिंक दैट इज द लास्ट स्टेप इन द योर लॉन्ग केस. तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है. एक ही चीज़ को आप सिर्फ डिस्कस करोगे, एराडिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को इस तरफ आप बताना शुरू, पहले एटलीस्ट उसको स्टेप्स बता दें. उसके बाद इफ द एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड ही में आस्क यू के कौन सी चीज़ इसमें किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है. वो भी डिपेंड करता है कि टाइम है या नहीं.